हेलो, हम लोगों ने अभी इसके पहले गॉस लॉ पढ़ा है। गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहता है उसका 1/ε0 गुना होता है। हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है अभी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके पहले कि इसको हम यूज़ करें, हम लोग कुछ एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं कि व्हेन द चार्ज आर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन continuous charge distribution अब तक हम लोगों ने जो इंटेंसिटी पढ़ी है, पोटेंशियल पढ़ी है, वहाँ हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ी। हम लोगों ने मान लिया है कि जो भी चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है और इसीलिए जो डिस्टेंस नापी थी उसी पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस नापी थी। जो उसके लिए फार्मूले हम लोगों ने प्रयोग किए थे उसी पॉइंट चार्ज को मान करके ही निकाले थे। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिटी E = 1/4πε0 Q/r²। तो अगर जो ये पॉइंट चार्ज है, किसी वस्तु को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज का जो यूनिट है बहुत छोटी है, इसलिए एक एक चार्ज को तो हम नहीं कंसीडर कर सकते और वस्तु के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस स्थिति में हम कैसे उसको स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड ऑन द बॉडी। चार्ज इज क्लोजली स्पेस्ड ऑन द बॉडी। This forms continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज है वो बिल्कुल इतना क्लोजली है कि वो किसी भी बॉडी के ऊपर पूरा फैला हुआ है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, वी डिवाइड द होल चार्ज इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। The total charge is divided into infinitesimal charges and that is considered as point charge. That is considered as point charge and the intensity and the potential is calculated. तो यहाँ पर जो चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 प्रकार का होता है। तो जो ये चार्जेस क्लोजली स्पेस्ड हैं, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, हम ये 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। There are 3 type charge distributions. Number 1, when the charge is distributed on a line or say on a wire or on a loop, whether it is wire, this is also in a line, the charge is distributed on a line. There is no thickness but there is only a line. If it is on the loop, the charge is on the loop. This is also on a line. So such type of charge distributions are called linear charge distribution. Linear charge distribution. Linear charge distribution के लिए हम यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दी लीनियर
charge density linear charge density lambda is defined as the total charge and divided by the length, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी if charge is q, length is l, then lambda is equal to q by l, coulomb per meter. This is the linear charge distribution and this is the linear charge density which we use. तो जहाँ भी हमको इस तरह का कोई भी कंडक्टर यूज़ करना रहता है, जो एक तरह का लूप है या वायर है लंबा, तो वहाँ पर हमको जब भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस पूरे वायर पर, तो उसके हम यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लेते हैं, उसको अपना हम पॉइंट चार्ज मान करके और गणना कर लेते हैं, फिर इसको सम अप करके पूरे लेंथ के द्वारा हम इंटेंसिटी निकालते हैं। Secondly, surface charge distribution. Surface charge distribution. Surface charge distribution. In the case of surface, the charge is distributed on the whole surface. Suppose this is the whole surface A, yes, and the charge is distributed on the whole surface. Charge distributed Q. Q the charge and distributed uniformly on the whole surface. And therefore we calculate the charge per unit area. We consider it as point charge. So here in the case of surface charge distribution, we find the surface charge density. Surface charge density sigma. Surface charge density sigma is defined as the total charge divided by the surface area. Here charge density, charge per unit area, that is charge Q upon the surface area S. This is coulomb per meter square. This is the surface charge density. Now third is volume charge distribution. In the case of conductor, the charge is on the surface. There is no distribution of charge inside the conductor, and therefore there is no volume distribution in the conductor. But if it is not conductor, it is a insulator, a dielectric material, then the charge is on the surface and inside the surface, and charge may be uniformly distributed on the surface and inside the surface. If charge is equally distributed, then we calculate volume charge density. Volume charge density. Volume charge density rho.
This is rho. Volume charge density rho is defined as charge per unit volume. Charge per unit volume. That is rho is equal to charge upon volume. Coulomb per meter cube. This is volume charge density. So when the charges are not point charge, generally they are not point charge, they are continuously distributed on the body. Then we calculate either linear charge density or surface charge density or volume charge density, and then calculate whatever we want to calculate. Now let us study applications of the Gauss law. To prove Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law means the force between two charges. To prove Coulomb's law with the help of Gauss law. Suppose there is a point charge. Q is a point charge we draw a sphere through a point P distant r apart. इस Q से एक Q है और R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, हमने वहां से होकर एक स्फीयर बनाया. दिस इज Q and this is P. The distance is R. There is a point P and there is a point O. At point O there is charge Q, and as a point P we draw a sphere. Sphere because we want to apply the Gauss law. For Gauss law we should have a closed surface, not open surface. This is a point charge, और किसी भी पॉइंट चार्ज को क्लोज करने के लिए अगर और कुछ ना हो तो स्फीयर इज बेटर. स्फीयर का प्रत्येक सरफेस इससे बराबर दूरी पर होगा, इसलिए वी हैव ड्रॉन अ स्फीयर. दिस इज Gaussian surface. This is called Gaussian surface. Though there is no surface, this is imaginary we have drawn to calculate the value. So this is the Gaussian surface. This sphere is known as Gaussian surface. This is the closed surface. Draw through the point distant R. Now the charge inside this closed surface is Q. Therefore, applying Gauss law, the flux linked with the surface. Suppose at P there is a area element or surface element. Because this is a sphere, therefore the area element is also perpendicular to the surface. This is the direction of
the area, and the intensity also is radial, goes from along the radius. If charge is here, the intensity is like this, so that is also in this direction. So E and ds both are in the same direction, and therefore to calculate the flux linked with the closed surface, the flux linked with the closed surface, that is phi E, which is equal to Q upon epsilon 0. Q is the charge enclosed by the closed surface, Q upon epsilon 0. Now phi E is equal to, because this is a closed surface, therefore the integral of E ds, this is the value of phi E, is equal to Q upon epsilon 0. Because this E and ds both are in the same direction, E and ds both are in the same direction, because this is a sphere, intensity is radial, and the surface area is also perpendicular to the surface. Therefore, we have to calculate the intensity. Therefore, is here integral ds is equal to Q upon epsilon 0 R E. This is the integration of the surface throughout the whole closed surface. This is a sphere, and therefore the surface area of the sphere is 4 pi r square. This is 4 pi r square, where r is the radius of this sphere, and hence intensity at P is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. एक ही हमको इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम इंटेंसिटी एट पी निकाल लेंगे. दिस इज द इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू. अभी इफ वी पुट ए टेस्ट चार्ज एट पी, if Q naught is placed at P, the force on Q naught is 1 Q naught E, that is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q naught upon r square. This is the Coulomb law. If Q naught charge is placed here, then the force between Q and Q naught is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q naught upon r square, where r square is the distance between the two charges and Q naught is the magnitude of the charge. So this is the Coulomb law. The force on Q naught is F equal to Q naught into E, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square and Q naught. This is the force on Q naught due to Q, and this is the force on Q due to Q naught. So this is the Coulomb law. Therefore,
force between Q and Q naught is 1/4 pi epsilon 0 Q naught upon R square. This is the force. So now, with the help of the Gauss law, we can calculate the intensity at P, which we have calculated here. This is the intensity at P due to the Q using Gauss law. And if we want to prove Coulomb's law, तो put a charge Q naught और इंटेंसिटी को Q naught से गुणा किया तो फोर्स Q naught पर आ गया. द फोर्स बिटवीन Q एंड Q naught, ये कूलम लॉ हो गया. तो हमको कूलम लॉ निकालना हो तो हम कूलम लॉ निकाल सकते हैं, और अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो P पर तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. दिस इज द इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P, राइट. तो एक तो ये एप्लीकेशन हुआ कि गॉस का हम किस प्रकार गॉस लॉ का इस्तेमाल इंटेंसिटी निकालने में अथवा कूलम लॉ को प्रूव करने में कर सकते हैं. नाउ सेकंड, there is a linear charge distribution. The intensity due to a state wire at any point P, distance R. इसी का यूज करके, इसी गॉस लॉ को यूज करके, इसी फार्मूले को प्रयोग करके और हम इंटेंसिटी निकालते हैं. सेकंड, electric field or field intensity. Electric field due to a straight long wire. Straight long wire. This is wire. This is charged wire. Let the charge density, let the linear charge density is equal to lambda. Lambda means इसके यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है. We have to find out the intensity at point P. You say point P. This is point P, where we have to find out the intensity. Because we have to use Gauss law. For Gauss law, it is a condition that the charge must be enclosed in a closed surface. That must be enclosed. अब ये चार्ज, इस जो लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको किसी न किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए. तो इसके लिए भी जस्ट ड्रा ये सिलेंडर. इस तरह का हमने एक सिलेंडर बना दिया. दिस इज Gaussian surface. This is a Gaussian surface. This is a cylinder. The radius of the cylinder is R. That is, the distance of this point is R. And this is the radius of the cylinder. So here we have to find out the intensity
the Gaussian surface is drawn through that point. So because we want to find out the intensity at P, and therefore this cylinder is drawn through P. The intensity here, the wire is charged. Due to this charge, the intensity is in this direction. That is radial to the wire. The intensity is in this direction, perpendicular to this curved surface. There are two surfaces. We know that this is the circular surfaces and this is the curved surface. And in the area and the curved surface. This curved surface is like this. The intensity is perpendicular to the surface. That is, this is the direction of the intensity. And also the area vector is perpendicular to this. In the cylinder, the surface यानी जो उसका डायरेक्शन है, अगर उसको हम वेक्टर लेते हैं तो the perpendicular is always perpendicular to the tangent at that point. A tangent is in the surface. Therefore, the intensity in the direction as well as the area vector. Let us consider a area element ds that is also perpendicular to the surface. But here the area vector is in this direction. This is in this direction. But intensity here is in this direction. This is direction of E. And the same way, the intensity is perpendicular to the wire. Wire is like this. And this is the direction of the intensity. And this is direction of the ds. Here also, if we consider a small element, ds in this direction, ds in this direction, but E is in this direction or in this direction. That is in the then parallel to the area. Here this is on this surface, but it is perpendicular to the direction of the area vector. Perpendicular to the direction of the area vector. But here direction of the area vector and the intensity both are in the same direction. Therefore, the flux linked with this Gaussian surface linked with the Gaussian surface phi E is equal to EDS. This is the curved surface 1. This is surface number 2 and this is surface 3. Phi is equal to E ds number 1 plus E ds number 2 and plus E ds number 3. Yeah. This curved surface is number 1. Here the intensity and the surface is in the same direction, that is angle is 0. Therefore, this is equal to E ds cos 0. Here E and ds both are perpendicular to each other.
ई डी एस कास 90 एंड प्लस ई डी एस कास 90 तो कास 90 यहाँ भी है, कास 90 यहाँ भी है, और यहाँ कास 0 नो, बिकॉज हियर द बोथ इंटेंसिटी the wire is like this is a wire inside this, तो intensity is in this direction और इसका जो एरिया है वो भी in this direction, but here the area is this area direction, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन that is perpendicular to this, but wire is like this and this is the direction of the intensity. So here the intensity and area are perpendicular to each other and therefore phi E is equal to cos 0 is 1, E को बाहर निकाला, ये हो गया ds, but this is 0, cos 90, this is a 0 and therefore this is equal to the phi E is equal to E ds means the total area of the curved surface. Curved surface is equal to 2 pi r L. 2 pi r L. L is the length of the cylinder. This is the area of the curved surface. Now, this is the total flux linked with this Gaussian surface. Now, according to Gauss law, this must be equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed in the Gaussian surface. ये हो गया, therefore phi E must be equal to the charge inside this. The length of the wire inside the Gaussian surface is L. You can write it charge Q upon epsilon 0, which is equal to charge is equal to L. L is the length inside this Gaussian surface, and per unit length the charge is lambda. Per unit length the charge is lambda, and therefore for L the charge Q is equal to L lambda. The total charge enclosed the surface is equal to L lambda upon epsilon 0. This is the flux, total flux linked with the surface. These two are the same things. दोनों तो एक ही चीज है. इसको हमने इस फार्मूले से निकाला, इसको हमने गास के नियम से रखा. Comparing 1 and 2, E 2 pi r L is equal to L lambda upon epsilon 0, और hence intensity E is equal to L से L कट गया, lambda upon 2 pi r, 2 pi epsilon 0 r, 2 pi epsilon 0 r. Volt per meter. This is the intensity due to ये स्टेट लॉन्ग वायर. एक लंबा बड़ा तार हम कर लें तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर इतना इंटेंसिटी होगी. लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी and r is the distance from the wire where we want to calculate the intensity, right? So using this Gauss law we can calculate of this intensity of any type of this charge carrier, any type of charge
body. Let us consider the intensity due to a sphere, charged sphere. Electric field due to a charged sphere. Charged sphere. The charged sphere may be either the charged sphere is insulator, if it is insulator, or dielectric, जिसे हम कुचालक कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं करती, where there are no free electrons, तो इसमें when it is charged, the charge is equally distributed everywhere. The charge is, suppose it is positively charged, then charge is everywhere on the surface and inside the surface. The charge is uniformly distributed when it is insulator or a dielectric. But if it is conductor or it is shell है, देयर इज नथिंग, एम्प्टी है, यहाँ खाली है. जब यहाँ पर खाली होगा तो यहाँ पर चार्ज नहीं होगा. यहाँ जो चार्ज इज ऑन द सरफेस, द चार्ज इज ऑन द सरफेस. हियर आल्सो इफ इट इज कंडक्टर, द चार्ज इज ऑन द सरफेस. Though it is solid, but still due to the free electrons, the charge are adjusted and the charge is only on the surface. So this is conductor, this is conductor, this is shell. यहाँ खाली है, ये पूरा ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड, ये खाली है यहाँ जगह. दिस इज शेल और दिस इज सॉलिड. तो ये तीन तरह के हमारे पास स्फीयर चार्ज के हो सकते हैं. चार्ज स्फीयर्स तीन तरह का हो सकता है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हियर द चार्ज इज ऑन द सरफेस ओनली. इट मीन्स इफ वी कैन कैलकुलेट फॉर द शेल, it means that is for the conductor, or if we calculate for the conductor, solid conductor, that is for the cell. The same expression and the same thing is there, a same behavior. The charge cell और conductor का, charge conductor का behavior एक जैसा है. तो now let us consider this conductor or charge cell. Electric field due to charge cell or conductor. Suppose this is a charge conductor or cell. Center of the cell, we have to find the field outside this conductor, on the conductor, inside the conductor. First, outside the conductor. There is a point P.
the distance r. We have to find out the field at point P. We know the way. We draw a Gaussian surface. We know because this is a sphere, therefore the suitable Gaussian surface will be the sphere of this radius. तो एक Gaussian surface हमने एक ड्रा कर दिया. This is the Gaussian surface. Now we apply this Gauss law. Suppose there is a small area element. We know because this is a sphere, there this is normal to the surface, and the intensity also is normal to the surface. That is also radial. जब ये रेडियल होगी ये भी इसी की दिशा में होगी. Both are in the same direction. Therefore, the flux over the closed सरफेस, जो क्लोज सरफेस हमने बनाया, ये गॉसियन सरफेस बनाया, इससे संबंधित कितना फ्लक्स होगा फाई ई. दिस इज इक्वल टू ई डी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0. Q is the charge given to the surface. Q the charge given to the shell or conductor. Q the charge given to conductor. Therefore, inside this Gaussian surface, the charge is Q. Therefore, this is equal to Q upon epsilon 0 or E ds. Because E and ds both are in the same direction, इसलिए cos 0 is equal to 1 Q upon epsilon 0 or E ds Q upon epsilon 0, or therefore E ds over the whole surface of this sphere is 4 pi r square. इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू टोटल करेंगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0. और इसलिए हेंस E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square. This is the electric field due to this charge sphere. Charge sphere. You know, this is just like the point charge is situated at O. पॉइंट चार्ज की तरह की जो इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाली थी कि कोई भी पॉइंट चार्ज की हो तो उससे r दूरी पर जो इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर. और यहाँ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है. स्टिल इट बिहेव्स लाइक इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट दिस. दो इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज, स्टिल द बिहेवियर ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज that the charge seems to be situated at center because the electric field is radial. अब ये तो हो गया at this surface. Now if you want to, this is outside the sphere, outside the sphere. Now on the sphere, on the sphere, अब ऑन द स्फीयर करेंगे
तो ऑन द स्फीयर, ये हमारा स्फीयर होगा, वही स्फीयर, दिस इज आर, और हमने इसके ऊपर ही कोई पॉइंट पी लिया जिसकी दूरी आर इसी आर के बराबर है। यहां भी उसी तरह हम करेंगे, तो ई और डी एस रहेगा। यहां पर हमने पी लेने की जगह यहां पर हमने पी लिया है, वेयर आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसमें ठीक इसी तरह इन प्लेस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पुटिंग r is equal to capital R, the radius of the charge sphere, and therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. Q upon R square. Now here we know that if the surface charge density is sigma, surface charge density sigma, तो sigma is equal to Q upon 4 pi R square. Q is equal to, therefore Q is equal to, here Q is equal to 4 pi R square sigma। तो यहाँ पर यदि Q की हम वैल्यू रख देते हैं 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर से कट जाएगा Q की जगह और बचेगा सिग्मा। 4 पाई आर स्क्वायर कटा तो बचा यहाँ सिग्मा, एंड देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी लाइक सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। ये आता है आर स्क्वायर, तो दिस इज आर, कैपिटल आर है ये इसका रेडियस, नाउ कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कटेगा, इप्सिलॉन 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपका सिग्मा, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इप्सिलॉन 0। जो इंटेंसिटी हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर अपान इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। बट हियर since Q is equal to 4 pi R square sigma, sigma is equal to Q upon 4 pi R square, where R is its radius। तो चार्ज Q दिया गया, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर हुआ Q, इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो E कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। दिस इज द इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द sphere, on the sphere। And now third, inside the sphere, inside the sphere inside the sphere। अब ये हमारा स्फीयर है, रेडियस इज आर, चार्ज इसको क्यू दिया, इसके अंदर किसी पॉइंट पर हमको लेना है P, पॉइंट इज P विच इज डिस्टेंट R। यहां से हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, ये स्फीयर आप रेडियस R, एंड देयरफॉर इस पे छोटा सा ds
and the intensity E both are in the same direction. इसलिए flux linked with Gaussian surface phi E is equal to E ds is equal to q upon epsilon 0. E ds, E and ds both are in the same direction, therefore cos 0 is equal to 1. So E ds comes out to be q upon epsilon 0. E ds is equal to q upon epsilon 0, or E into 4 pi r square is the surface area, is equal to q upon epsilon 0. But inside any charge conductor or any shell, there is no charge. Since q is equal to 0, no charge inside the conductor or shell, and therefore E is equal to 0. तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। यानी यदि ये हमारा सेंटर है स्फीयर का, ये उसका सरफेस है, दिस इज द सरफेस आर, देन फ्रॉम हियर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, एज वी गो अवे द इंटेंसिटी डिक्रीजेस लाइक दिस। और यहाँ इसके अंदर इंटेंसिटी 0, inside the surface the intensity is 0, and outside the surface intensity is like this. So this is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square, and here the intensity is 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. This is the maximum value of the intensity on any surface. Now ये तो हो गया गॉस के, जो गॉस का प्रमेय है उसके एप्लीकेशंस के लिए। और फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।